नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear viewers, this video is sponsored by Learn Laws, a pro bono publico initiative which aims to spread legal knowledge. This video deals with the dissolution of marriage under Muslim law. This video is prepared to beneficiate law students as well as common public who want to seek the knowledge on the various ways of dissolution of marriage under Muslim law. This video deals with the meaning of dissolution of marriage, Quranic laws dealing with the dissolution of marriage, and the various ways of dissolution of marriage practiced in Muslim community, and the legal effects of dissolution of marriage. What will be the legal effects of the dissolution of marriage? So this video is all about the concept of dissolution of marriage, यानी कि तलाक, खुला, मुबारत या फिर जुडिशियल डाइवोर्स, दैट इज़ फस्ख इन द टर्म्स ऑफ मुस्लिम लॉ. जिस तरह से निकाह के ज़रिए एक मुस्लिम मेल और फीमेल मैरिटल रिलेशन में शामिल होते हैं, इसके अपोजिट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ज़रिए उन दोनों के इस मैरिटल रिलेशन का ब्रेकअप भी हो सकता है. इट इज़ अलाउड इन इस्लामिक लॉ बट इन सर्टेन कंडीशंस. तो निकाह की प्रोसेस के ज़रिए एक मुस्लिम मेल और फीमेल मैरिटल रिलेशन को बनाते हैं, और जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है जिसके मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी कि तलाक, व्हेन द हस्बैंड is initiating for the dissolution of marriage, the process called talaq. When both the parties, mean husband and wife, are involved or consented for the dissolution of marriage, this is the another process which is known as Khula or Mubarat, etc. Another way of dissolution of marriage is also recognized under Muslim law, that is the judicial that is by the judicial process, that is known as Khula. So we will deal these three different ways of dissolution of marriage in this video. So first of all, I would like to introduce the concept of dissolution of marriage. Dissolution of marriage means putting the marital relation to an end, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो मैरिटल रिलेशन है उसको ख़त्म कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है. अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे बी थ्रू certain ways. It may be the process of divorce or talaq, it may be the process of khula or mubarat, it may be the process of judicial divorce, that is faskh. So dissolution of marriage may be by the death of either spouses. एक तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक के इंतकाल होने पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नेचुरली हो ही जाएगा. सेकंड way of dissolution of marriage is by the act of parties to the marriage. Under this head, there are three ways of dissolution of marriage. When at the instance of husband the dissolution of marriage is taken place, this is the process of talaq, or this type of dissolution of marriage is known as talaq. At the instance of wife, the dissolution of marriage when happening at the instance of wife, this is the talaq-e-tafweez. And when both the parties, यानी कि husband and wife, both the parties are consented mutually for the dissolution of marriage, this process is known as Khula and Mubarat.
When the dissolution of marriage taken place by the judicial process against petition for decree of dissolution of marriage by either spouses, this is the another way of dissolution of marriage that is known as faskh in the terms of Islamic laws. What are the Quranic teachings on the concept of divorce? So the point to be noted, the Quranic teachings discourages dissolution of marriage. Quran leaves vast possibilities of reconciliation between husband and wife when certain differences or issues have been taken place in the relation of husband and wife. So divorce is only permitted in the Islamic law. Divorce or talaq is only permitted in extreme cases, when the marital relation between husband and wife becomes burdensome and harmful for each and other, and due to the differences between both the parties, यानी husband and wife के भी differences के चलते, the harmony could not be maintained between husband and wife, then Quranic law permits breakup of marriage or dissolution of marriage through various ways like talaq, khula and faskh. So talaq is only permissible when the marital relation between husband and wife becomes burdensome and harmful due to the differences between both. A Muslim husband cannot divorce his wife at his whim or caprice. मनमाने तरीके से divorce एक मुस्लिम husband तलाक नहीं दे सकता. अगर वो देता है तो it is in the contravention of Islamic teachings or the Quranic teachings. The Quran leaves vast possibilities of reconciliation between husband and wife if there any difference between them has arisen. The process first, if the couples fear separation, you shall appoint an arbitrator from his family and an arbitrator from her family. If they decide to reconcile, Allah Almighty will help them get together. This is the direction of Holy Quran through the chapter number 4 verse number 35. So the Quranic law first introduced the process of arbitration or mediation whenever required if the parties fear separation. So the process of arbitration or mediation must be complied for the reconciliation between husband and wife. In another place of the in the Holy Quran, there is a provision of cooling off. Those who intend to divorce their wives shall wait for 4 months. This is the period of cooling off. If they change their minds and reconcile, then Allah Almighty is forgiver, merciful. If they go through with the divorce, then God is hearer, Allah is hearer, knower. This is the provision of the Holy Quran in chapter number 2, verse number 226 and 227. The number of talaq in the Holy Quran is limited. The Quranic verse declares divorce is twice, at-talaqu marratan, talaq sirf दो हैं. Then either keep her in an acceptable manner or release her with good treatment. जहाँ तलाक की सूरत पैदा हो गई है और तलाक ही अब आखिरी ऑप्शन है, तो ऐसी सूरत में कुरान करीम की टीचिंग्स, इस्लामिक लॉ की टीचिंग्स ये हैं कि तलाक सिर्फ 2 मरतबा दिया जाए, उस और 2 मरतबा तलाक देने का तरीक़ा भी वो अपनाया जाए जो कुरान में मेंशन है, जिसको हम तलाक़ अहसन कहते हैं. प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में मैरिज के डिसोल्यूशन के लिए तलाक का तरीका अपनाया जाता था. इस्लामिक लॉ ने इसको, कुरानिक लॉ ने इसको रेगुलेट किया, और जो कदीम ज़माने में कई मरतबा तलाक देना का जो रिवाज था, यानी कि एक शौहर अपनी बीवी को टॉर्चर करता था, बार बार फ्रीक्वेंटली उसको तलाक देता था, फिर
रुजू कर लेता था, फिर तलाक देता था, फिर रुजू कर लेता था। यानी कि उसको अपने उस रिलेशन रीमैरिज के लिए लायक भी नहीं छोड़ता था और उसको एक्सेप्टेबल मैनर के साथ अपने रिलेशन में भी रिटेन नहीं करता था। इस प्रोसेस को, इस रिवाज को, इस प्रैक्टिस को कुरान करीम ने प्रोहिबिट किया और एक कैप इस पर इम्पोज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की वर्स नंबर 29 विच इज़ चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 229, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक मैंडेट जारी किया और इरशाद फरमाया, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 बार है। यानी कि अगर किसी ने एक मरतबा तलाक दिया, गुंजाइश रहती है कि वो अपनी उस वाइफ को जिसको तलाक दिया है निकाह करके अपने रिलेशन में रिटेन कर ले। इसके बाद फिर कुछ ऐसी हालात पैदा होते हैं कि दूसरी तलाक की सिचुएशन पैदा होती है, दोबारा तलाक दे सकता है। इसके बाद अगर तीसरा तलाक दिया गया तो वो वाइफ उसके लिए फिर परमिसिबल नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तलाक मर्रतान, तलाक की तादाद सिर्फ 2 है, यानी कि तलाक सिर्फ 2 हैं। अब इसके बाद या तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, यानी तीसरा तलाक दे के उसको या तो रिलीज़ कर दीजिए हमेशा के लिए, या फिर यहाँ 2 तलाक के बाद उसको अपने रिलेशन में रिटेन कर लीजिए। इट इज़ परमिसिबल इन द लाइट ऑफ होली कुरान। रीमैरिज इज़ अलाउड, यानी कि एक मरतबा किसी ने तलाक दिया उस तरीके पर जो कुरान ने तरीक़ा तलाक प्रेस्क्राइब किया है, तो दोनों फरीक़ों के बीच यानी उन हस्बैंड और वाइफ के बीच रीमैरिज इज़ अलाउड। दिस इज़ मेंशन्ड in chapter number 2 verse number 229. A couple enjoys the freedom to remarry and reunite even after 2 divorces, but after the third they can reunite only if the woman gets married to another man and divorced. This is the teaching of Holy Quran regarding the remarriage between the husband and wife in case of 1 or 2 talaqs. Talaq is not an arbitrary power of husband. The Quran discourages divorce and permits it only in extreme cases, followed by the pre-divorce conference, that is the process of mediation or arbitration. The viewpoint of the Indian courts on the talaq is not an arbitrary power of the husband, is a Muslim husband cannot divorce his wife at his whim or caprice. So, talaq must be for a reasonable cause and must be followed by a pre-divorce conference to arrive at a settlement. It was held by the Guwahati High Court in Zinat Fatima Rashid versus Muhammad Iqbal Anwar case, which was decided in 1993, that a Muslim husband cannot divorce his wife at his whim or caprice. The Quranic teaching on this point is also same. The talaq must be for a reasonable cause and must be followed by a pre-divorce conference to arrive at a settlement. This is the teaching of Holy Quran. But unfortunately, in Muslim community, the process of mediation, arbitration, or the process which is directed by the Holy Quran as a pre-divorce conference to arrive at the settlement of husband and wife is not followed. What are the formalities for the case of what are the formalities for a case of divorce? What are the formalities? Which formalities must be followed or complied? Which formalities for the divorce must be complied? So, first formality which is prescribed in the Holy Quran is pre-divorce conference, that is arbitration or mediation. So, if a couple fears separation, you shall appoint an arbitrator from his family and an arbitrator from her family. If they decide to reconcile, Allah Almighty will help them get together. This is the teaching of Holy Quran. Unfortunately, this teaching is not obeyed by many of the Muslims in India. Another formality which is pre-divorce formality is cooling off.
यानी कि एक 4 महीने का इंतज़ार किया जाए जिस वक्त में कि उन फरीक़ों के बीच यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए जिससे कि डाइवोर्स का नंबर या डाइवोर्स के ताल्लुक़ से, सेपरेशन के ताल्लुक़ से वो अपना माइंडसेट या अपना इरादा चेंज कर लें. दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द होली कुरान in chapter number 2 verse number 226 and 227. This is known as the cooling off period. A separate chapter named Al-Talaq is arranged in the Holy Quran, which provides wide guidelines for the divorce. According to this chapter, or according to the teachings of Holy Quran, the most proper way of talaq is talaq-e-ahsan. Allah Rabbul Izzat says, O Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, instruct the believers, when you intend to divorce women, then divorce during their period of purity and count their prescribed period, and fear Allah your Lord. Do not force them out of their homes, nor should they leave unless they commit a blatant misconduct. These are the limits set by Allah Almighty, and whoever transgresses Allah's limits has truly wronged his own soul. You never know, perhaps Allah will bring about a change of heart later. This is the teaching of Holy Quran about the process of talaq followed after the pre-divorce conference or the cooling off period. Then when they have almost reached the end of their waiting period, either retain them honorably or separate from them honorably, and call 2 of your reliable men to witness either way, and let the witnesses bear true testimony for the sake of Allah. This is enjoined on whoever has faith in Allah and the last day, and whoever is mindful of Allah, he will make a way out of them. This is mentioned in the Holy Quran in chapter number 65 verse number 2. So regarding the formalities for the talaq must be followed, there are 2 conditions, there are 2 formalities which must be followed in the pre-divorce period, that is the mediation or arbitration or pre-divorce conference, and second is the cooling of waiting for a period of 4 months, that is the cooling off period, and later when the divorce is necessary between the husband and wife, then the mode of talaq that is known as talaq-e-ahsan must be applied or must be followed. तलाक़-ए-अहसन की सूरत में, तलाक़-ए-अहसन के तरीक़े पर अगर तलाक़ हुआ है तो इट मे बी 2 times, एंड आफ्टर 2 times ऑफ तलाक़ विच इज़ इन डिफरेंट टाइम्स और अलग अलग ज़मानों में होगा, इसके बाद कुरान करीम की अभी मैंने पीछे आयत कोट की थी जिसका मफ़हूम ये था कि ये हस्बैंड और वाइफ रीमैरिज करने के लिए एंटाइटल हैं बिना किसी इंटरमीडियरी मैरिज के. Dissolution of marriage when proceeds at the instance of husband, this is known as talaq. So talaq can be classified on the way or styles in 2 types or 2 classes, talaq-e-sunnat, talaq-ul-bidat. Talaq-e-sunnat may be classified in 2 classes, talaq-e-ahsan, which is the most proper method, and talaq-e-hasan, which is a proper method. So in talaq-e-ahsan, which is approved by the Holy Quran, single pronouncement of divorce made during a period of tuhar followed by abstinence from sexual intercourse. This is the process of talaq-e-hasan के बीबी के तोहर के वक्त में, यानी कि जब वो पाकी की हालत में हो,
यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है उस पीरियड में ना हो, उस वक्त में एक जुमले से सिंगल प्रोनाउंसमेंट के ज़रिए उसको तलाक बोला जाए। अब ये अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ अल्फाज मैटर नहीं करते, बल्कि इरादा यहाँ मैटर करता है कि अगर उसको तलाक देने का, यानी कि उसको रिश्ते अज़बात से निकालने का या उस रिश्ते से अलग होने का जो इरादा है, उस इरादे को मुख्तलिफ अल्फाज से ज़ाहिर किया जा सकता है। इसमें वर्ड तलाक इस्तेमाल हो सकता है या कुछ और कोई और वर्ड भी तलाक हो सकता है। तो ये सिंगल प्रोनाउंसमेंट होना चाहिए, यानी कि एक मरतबा कहा गया हो। और फिर 3 लूनर मंथ्स तक वेट किया जाए। इस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों रुजू कर लेते हैं, यानी कि अपनी जो अज़दवादी ज़िंदगी है उसमें लौट आते हैं, तो ऐसी सूरत में ये तलाक रिवोक हो जाता है, यानी कि जैसे तलाक हुआ ही नहीं था, यानी कि इस तलाक का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और ये तलाक रद्द हो जाएगा। दूसरा तलाक का दूसरा जो तलाक़ुल-सुन्नत में जो दूसरा तरीक़ा है तलाक का, दूसरा जो मोड है तलाक का, वो है तलाक़-ए-हसन। इसको भी इस्लामिक लॉ प्रॉपर तरीक़ा मानता है। इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट्स होंगे, यानी कि 3 बार कहा जाएगा तलाक, लेकिन तीनों अलग अलग ज़मानों में, अलग अलग वक्तों में ये सेपरेट प्रोनाउंसमेंट्स होंगे। तो देयर आर 3 प्रोनाउंसमेंट्स विच आर सेपरेट। ये भी तुहर के पीरियड में होंगे, जब बीबी पाकी के ज़माने में हो, उस वक्त में होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर आज एक मरतबा अपनी वाइफ को तलाक बोला, फिर इसको 1 महीने की मुद्दत के बाद दोबारा तलाक कहना होगा, फिर तीसरे महीने की मुद्दत के ख़त्म होने पर एक बार फिर का तलाक कहना होगा। तो ये इस तरह से 3 प्रोनाउंसमेंट हुए जो कि अलग अलग टाइम्स में हो रहे हैं। इनके दरमियान अगर वो रुजू कर लेते हैं तो ये तलाक भी रिवोक हो जाएगा, यानी कि तलाक़-ए-सुन्नत का ये जो दूसरा मेथड है, दूसरा जो मोड है तलाक़-ए-हसन, ये भी रिवोकेबल तलाक है। और तीसरा तरीक़ा है तलाक़ुल, जो कि कहलाता है तलाक़ुल-बिदत। ये नापसंदीदा है, कुरान करीम के अंदर इसका वाज़ेह तौर पर ज़िक्र नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स ने वयक-वक्त 3 मरतबा के तलाक के प्रोनाउंसमेंट को 3 तलाक माना है। जैसा कि कहा गया था तलाक़-उ-मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 हैं, और यहाँ चूँकि 3 तलाक 3 बार कहा जा रहा है, तो इसको कंसीडर किया है कि जैसे मानो कि 3 तलाक उसने दे दिए। अब इसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि जहाँ 3 तलाक या ट्रिपल डाइवोर्स के जो केसेस हैं, उसमें दोनों पार्टीज़ यानी हस्बैंड और वाइफ इस ट्रिपल डाइवोर्स के बाद रीमैरिज करने के लिए प्रोहिबिटेड होते हैं। ऐसा एक जमहूर उलेमा के नज़दीक ऐसा माना गया है। तो तलाक के ट्रिपल डाइवोर्स और एक वक्त में 3 बार तलाक कह देना, ये इर्रिवोकेबल तलाक होता है, यानी कि अब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता, और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए प्रोहिबिटेड हो जाते हैं रीमैरिज करने के लिए। हालांकि इंडिया में इस वक्त इसको इलीगल माना गया है under the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. Now practice of triple divorce has been declared as illegal and a punishable offense. If a person practice this type of this mode of talaq, this is a punishable offense. Second mode of dissolution of marriage is Khula and Mubarat. In this process, both husband and wife are involved. The dissolution of marriage at the instance of husband and wife, both. This way of dissolution of marriage is known as Khula and Mubarat. So in case of Khula, a dissolution of marriage by means of Khula is a divorce with consent and at the instance of the wife. At the instance of wife, whenever the dissolution of marriage is taking place or happened, and husband is consented for this, then this process of dissolution of marriage is known as khula, which is at the instance of the wife, so in which she gives a consideration to husband for her release from the marital tie. Once the offer accepted by the husband, it operates as a single irrevocable divorce, यानी कि
तलाक बाइन जो तलाक-बिदत का 3 तलाक वाला तरीका है, ये एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और फिर इनके दरमियान रीमैरिज पॉसिबल नहीं है विदाउट इंटरमीडियरी मैरिज के। सेकंड वे when husband and wife both are involved in the dissolution of marriage is Mubarat. So when the aversion is mutual and both the parties desires a separation, the transaction is called Mubarat. In case of Mubarat, the offer may proceed from any side. Once the offer is accepted, the dissolution is completed and it operates as an irrevocable divorce. That is Talaq-ul-bidat. Another way of dissolution of marriage is Faskh. So dissolution by the court against petition for decree of dissolution of marriage by either spouse is known as Faskh. So Faskh is another words. Faskh in another words, it is a judicial divorce. So in India, the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 was passed to consolidate and clarify the provisions of Muslim law relating to suit for dissolution of marriage by women. This act laid down the following grounds. This act laid down certain grounds of divorce at suit of wife. So these grounds are absence of husband, लंबे वक्त से 4 साल और उससे ज़्यादा से अगर एक हस्बैंड का ठौर ठिकाना वेयर अबाउट पता नहीं है कि कहाँ है शौहर, ऐसी सूरत में इस्लामिक लॉ और जो डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, इसको एक ग्राउंड मानता है कि वाइफ कोर्ट में जाकर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन फाइल कर सकती है और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि 4 साल और उससे ज़्यादा से उसका शौहर उसका कोई आता पता नहीं है, उसका वेयर अबाउट पता नहीं है, तो ऐसी इस ग्राउंड पर कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री अवार्ड कर सकता है। सेकंड ग्राउंड इज़ फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। वाइफ को मेंटेनेंस देना हस्बैंड की फोरमोस्ट ड्यूटी है और इसमें अगर वो कोताही बरतता है तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। थर्ड ग्राउंड इज़ इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड। ऑफेंस के करने पर अगर एक लंबे टाइम के लिए यानी कि 7 या उससे ज़्यादा सालों के लिए अगर इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तो इस सूरत में भी उसकी वाइफ के पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो अपने आप को उसके रिश्ते में रिटेन रखे और अगर नहीं चाहे तो ऐसा अगर नहीं चाहे तो वो कोर्ट की मदद से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करा सकती है इस ग्राउंड पर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड अगर अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी वास्ते इनकॉम्पिटेंट है तो ऐसी सूरत में भी एक खातून एक वाइफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए कोर्ट में जा सकती है और ये ग्राउंड होगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। नेक्स्ट ग्राउंड इज़ इंसैनिटी ऑफ हस्बैंड। अगर शौहर पागल हो गया है इस ग्राउंड पर भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ ऑन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। फॉर एग्जांपल अगर किसी जो वाइफ है उसकी एज मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू से सी वाज नॉट मेजर, यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी उसने हासिल नहीं की थी और उसके गार्जियन ने अपनी कंसेंट देकर उसको किसी मैरिटल कॉन्टेक्ट में इन्वॉल्व कर दिया है, तो एक मुस्लिम औरत को ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हासिल होता है कि जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी पर आए तो चाहे तो इस रिलेशन को रिटेन कर सकती है या रिप्यूडिएट कर सकती है। इस ग्राउंड पर भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकता है। नेक्स्ट, any another ground recognized as valid under Muslim law, for example there may be certain grounds also for the dissolution of marriage like ila, zihar, lian, or that is imprecation, false imprecation, etc. So these are certain grounds recognized or mentioned under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 for the dissolution of marriage by the court, that is known as Faskh in the terms of Islamic law. लीगल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा तब? तो देयर आर सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ डाइवोर्स और तलाक। फॉर एग्जांपल राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। अगर सेपरेशन हो गया है तलाक के ज़रिए या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ है किसी भी तरह से, इट में बी इन द वे ऑफ तलाक, खुला, मुबारत और फस्ख, तो बोथ द पार्टीज हैव द राइट टू अनदर मैरिज। This is the legal effect of dissolution of marriage. Dower becomes immediately payable if not paid. अगर किसी मर्द ने किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी का डावर जो महर अदा नहीं किया है तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पर ये डावर इमीडिएटली पेबल हो जाएगा।
म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस सीज हो जाएंगे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के रहते हुए एक के इंतकाल पर दूसरा उसकी प्रॉपर्टी में जो इनहेरिटेंस का राइट रखता है, यानी कि तर्क विरासत को पाने का जो हक होता है, वो हक इनका सीज हो जाएगा। कोहिबिटेशन दोनों के दरमियान जो है प्रोहिबिटेड होगा, यानी कि किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप दोनों के दरमियान हराम होगी या प्रोहिबिटेड होगी। रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्स्ड अलाउड बट इन केस ऑफ तलाकुल सुन्नत, अगर तलाकुल सुन्नत के तरीके पर इनके दरमियान तलाक हुआ है तो दोनों के बीच में रीमैरिज हो सकता है। तलाक बिदत जो ट्रिपल डाइवोर्स है, जो अनफॉर्चुनेटली इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में मोस्टली प्रैक्टिस्ड है, उस तरीके पर अगर तलाक होता है तो दोनों के दरमियान विदाउट इंटरमीडियरी मैरिज रीमैरिज नहीं हो सकता। यहीं पर एक इशू अराइज होता है हलाला का। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो हलाला पर बनाने के लिए जा रहा हूँ। वो ज़रूर देखिएगा कि जो मिसकंसेप्शंस हैं हलाला को लेकर के, वो इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्सीज नॉट अलाउड विदाउट एन इंटरमीडियरी मैरिज इन केस ऑफ तलाक बाइन और तलाकुल बिदत। ये पार्टीज रीमैरिज विदाउट एन इंटरमीडियरी मैरिज, और यानी कि जिसको हम हलाला कहते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हलाला क्या है और उसको लेकर के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो क्या है, और क्या इस्लामिक लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। इन डिफरेंट इशूज़ को मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि हलाला पर होगी। तो द स्टेटस ऑफ सच मैरिज रिमेन इरेगुलर नॉट वॉइड इफ divorcees remarriage without following the intermediary marriage or halala. Without the intermediary marriage, the status of this remarriage will be irregular in the light of Islamic laws, not void. Thank you for watching this video.